पहले तुम्हारे बॉडी ओ हेडसेट गिर गया पीछे, सॉरी। बॉडी बन रही है नहीं बन रही? टेल मी गाइस, टेल मी। यार इसी हाथ का दिखाऊंगा मैं, इस हाथ का तो ना बनता नहीं है, पता नहीं यार दिखता नहीं है, लाइटनिंग का इशू है इस हाथ पे। जिस हाथ पे देख बढ़िया लाइटनिंग आ रही है, तो ये दोला दिख रहा है, या दोला 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 या नहीं दिखता। यहाँ पे लाइटनिंग इशू है थोड़ा सा। तो भाई ये सब है लाइटनिंग का चक्कर। आज अपने को रियल एक्सपीरियंस हो गया। अब तक तो अपन सोच रहा था कि भाई लाइटनिंग इफेक्ट होता होगा, बट बॉडी तो असली में भी होती होगी, है ना। बट अब लाइव देख लिया भाई मैंने। अब देखो जैसे मेरा हाथ है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा इस जगह ना, बट तुम्हें दिख रहा है ये पंप, ये यहाँ से ये मतलब कुछ नहीं पे ये दिख रहा है। तो जब कुछ होगा तो डिफरेंट चीज़ आएगी ना बिडू। तो don't trust the fucking Instagram baby, go fuck Instagram। लेकिन कोई नहीं, लाइफ का एम सिंपल है, फिट रहना है, दिखने के लिए नहीं, अपने लिए। किसी को दिखाने के लिए फिट रहोगे तो कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे, बिकॉज कर्मा इज अ बिच, कर्मा विल गेट यू समवेयर इफ यू वांट। ये तो यार फिर तो तुम इंडिया में रह के अगर तुम्हें ये चीज़ बतानी पड़ रही है तो फिर तो तुमने यार फेल कर दी दुनिया। क्योंकि ये तो कृष्ण जी कह गए हैं भगवत गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और तुम कर्म इसलिए कर रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए। दैट्स सो नॉट फकिंग फेयर भाई, बड़े हो जाओ। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए। एवरीथिंग यू डू इट फॉर योरसेल्फ, नॉट टू शो, नॉट टू अर्न, for no reason, just for yourself। if चल ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, लेकिन बांटेंगे थोड़ा बहुत तो। बात नहीं सही तो बढ़ेगा। पैसे वैसे चार्ज करने लग जाओ बस क्या। यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब नहीं, हाँ यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे ही वो फीचर होता है, कौन सा मेंबरशिप वाला, कि मेंबरशिप ले लो भाई, ज्ञान मिलेगा फ्री का। फ्री का तो नहीं, पैसे का भाई, सॉरी। सो यार आज नहीं गया जिम यार, आज ऑफिस से आते वक्त ना भीग गया मैं पूरा ना, तो नहा लिया। नहाने में भी कैलोरीज बर्न हो जाती है। ऊपर से कल सूर्य नमस्कार किया था, तो अब मैं 4 से 5 सेट पे जाने की कोशिश कर रहा था। तो 5वां सेट, वैसे मैं 9 के 4 सेट कर रहा था, तो कल मैंने किए 4 सेट, और फिर आगे 3 या शायद 6 और करे थे। 9 का सेट नहीं करा था, 6 का सेट करा था। हाँ तो ये कंधा हल्का सा बोल गया था, मतलब तब तो पता नहीं चला, बट हल्का सा स्ट्रेन आया, बहुत हल्का सा। वैसे तो ये जाएगा नहीं, बट कल मैं सोने से पहले इसके ऊपर थोड़ा बाम लगा लूँगा, तो ये अगली सुबह तक ठीक हो जाएगा, फिर ठीक है। अभी तो क्या है, अभी जैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब अगर मैं एक्सरसाइज कर लूँगा तो वो पेन थोड़ा और बढ़ जाएगा ना, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वैसे तो आज वैसे भी मैं आलस में हूँ यार, पहले जिम चला गया था, फिर अगले दिन सूर्य नमस्कार कर लिया। 1 दिन का ब्रेक तो मैं ले रहा हूँ वैसे ही, और बारिश भी हो गई है तो मन भी नहीं कर रहा, मौसम अच्छा सा हो रहा है। अच्छे से मौसम में कुछ और तो करने का मेरा मन नहीं है, बट ठीक है, जिम भी नहीं जाते हैं। जिम में तो रास्ते में पानी भरा होता है, वरना मैं चला जाता। बारिश में ये दिक्कत है कि पूरा रास्ता ना, ये गुड़गांव है भाई, गुड़गांव में तुम्हें पता नहीं है, इन्हें वाटर बोट सिस्टम, वो जो नहीं होता मोटर बोट होती है गोवा के अंदर, वो चला देनी चाहिए भाई बारिश के टाइम में। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, शहर ऐसे ऐसे तैरता है पानी में, यो कार ऐसे तैर रही होती है, बाइक लेके जाओ, बगल वाली कार बगल वाली कार फील ले रही होती है सर्फिंग का। सोसाइटी डूब जाती है भाई, सोसाइटी में सारी गाड़ियाँ ऐसी लगती है जैसे कोई बीच है, बीच पे सारी नावें नहीं खड़ी होती, लहर आती है तो सारी नावें ऐसे ऐसे हिलती है, तो भाई कोई गाड़ी निकलती है, सारी कारें ऐसे करके हिल रही होती है। तो गुड़गांव में सही फील दे रहा भाई। यहाँ पे अरावली हिल्स भी है, तो पहाड़ भी दिख जाते हैं, बारिश के अंदर गोवा बन जाता है ये। और गर्मी तो खैर होती ही है यहाँ। और कौन सा सीज़न चाहिए तुम्हें बताओ। सर्दी के अंदर यहाँ पे इतना स्मॉग हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि ओ भाई ओ स्नोफॉल हो रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा, इतनी गहरी स्नोफॉल हो रही है। बट ठीक है, हो जाएगी, बर्फ़ भी गिर जाएगी भाई, यहाँ गिरवा देंगे हम। तो ये तो सीन है गुड़गांव का। But in this environment, if you need to stay healthy and a happy life, you need to do 2 things. First, get into physical fitness, physically fit
फिजिकली फिट, फिजिकली फिट, हाँ तो फिजिकली फिट हो जाए भाई। कई गाना था ये, वो बंदा करता है मस्त वाला, उसके ट्रैप्स होते हैं तो ऐसे ऐसे करता है, उसके ट्रैप्स बाहर निकलते हैं, है ना, फिजिकली फिट। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू गेट योर सेल्फ फिजिकली फिट। भागो दौड़ो, जिम जाओ, नाचो कूदो, कुछ भी करो, बट गेट योर सेल्फ फिट। That's one of the most, not one of the most, that is the most important thing that you can do in your fucking life, ठीक है, in your day। बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो हमने बताया वो बताया, गेट योर सेल्फ एजुकेटेड, रीड बुक्स, रीड जर्नल्स, रीड many things, not just read one thing again and again. Do read multiple things so you get a better picture or a bigger picture. So education is must, every kind of education is must। सब कुछ पता होना चाहिए, तो उसके लिए पढ़ाई करो, सब कुछ पढ़ो। और तीसरी थिंग जो मैं तुम्हें नहीं जान पाओगे तुम, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा मतलब दूसरों को तुम्हें नीचे दिखा रहा हूँ मैं वैसे थोड़ा सा, तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन वो टीचिंग है वेरी सिंपल। लाइक मॉडर्न डे एनलाइटेड मैन जिन्होंने बताया वो थे बुद्धा, जिसे हम मतलब लास्ट पर्सन कह सकते हैं जो उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा ह्यूमैनिटी के ऊपर। उनकी टीचिंग सिर्फ सिंपल सी थी, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो। तो ये इसका बहुत 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 गहरा कंसेप्ट है, लेकिन मतलब सांस लो, तो मैं तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि लंबी लंबी सांसें लो। ऐसा नहीं कि तुम बिना सांस लिए बैठे हुए हो, सांस तो सब ले रहे हैं, गधे घोड़े ले रहे हैं, घोड़े ले रहे हैं, शेर ले रहे हैं, इंसान ले रहे हैं, सांस सब ले रहे हैं, बट फॉर ह्यूमंस इट इज़ डिफरेंट। इफ यू कंसंट्रेट ऑन योर on your breathing, you will get enlightened. How funny is that, bro? It's so funny. Like a dog can be breathing and a human can be breathing. A human get enlightened, but a dog cannot. So that's the fucking difference, you dumbass. So that's the fucking difference. So लंबी लंबी सांसें लो, get yourself full with oxygen। लंबी लंबी सांसें लेके हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाओ, ताकि तुम्हारा रोआ रोआ बोल सके, I'm so high, I'm so high। चलो ठीक है, तो ये अपन कर रहे थे, सारी बकवास हो गई है। तो ये लाइफ को बेटर से जीने का तरीका है ही। अपन पढ़ रहे थे बुक द मिस्ट्री मेथड बाय द मिस्ट्री, हाउ टू गेट ब्यूटीफुल वुमन टू बेड। मैंने क्या कहा, सब पढ़ेंगे भाई। अभी तक मैंने जो किताबें पढ़ी वो भी सुन लो और इसको भी सुन लो, ठीक है। तो हम थे 8th चैप्टर पे थे शायद, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सिखाई इन्होंने। मैं अभी भी रीडिंग स्किल डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बुक है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, वरना मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ तो मेरे अकेले के काम आती है। मैंने कहा सेल्फिश नहीं होते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा नहीं कि तुम्हारे लिए माइक वाइक लगा के यहाँ कि मतलब कोई अलग से रीडर बैठाऊँ मैं कि सर प्लीज़ हमारे लिए ये बुक पढ़िए आके। भाई मतलब ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर का तो फ्यूचर बताएगा ना बीड़ू। अभी तो अपन प्रेजेंट में जी रहा है ना, तो प्रेजेंट में तुम्हें मेरे को ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैं कहाँ था, रुको 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 25 पेजेस वर लेफ्ट, 25। तो हम थे 8th चैप्टर पे। 8th चैप्टर थोड़ा सा बचा है, इसमें हम पढ़ रहे थे जेलसी। सो लेट्स वर्क ऑन डेमोन्स्ट्रेशन दैट क्रिएट जेलसी। Have a female wing or pivot who is in the know with you. Build a pawn while in the club. For example, let's say I'm in isolation with my target and I do a brief takeaway. I will use a lock-in prop on her. I enjoy using my cowboy hat and then go find a girl from previous set. I'll tell her, I'm sitting over there with my friend, let me introduce you. When I return with this male friend, with this friend will sit on my lap. A previous set has now been merged with the new one. But instead of group to group, it's isolation to isolation, making a 2 set. From the point of view of a girl I bought over, introducing her to one of my other friends is respectful and comfort building tactic. That this friend is a hot girl helps with the social proof. She also feels good when I keynote her in front of other girls.
My target, the girl who is still wearing my cowboy hat as a lock-in prop, now has a challenge on her hand. Not to mention completely unexpected trigger of jealousy. Booyah. Sometimes the first moment she feels jealousy is also the first moment she consciously realizes that she is into you and that she wants to have you. Besting the other girls. If you don't have ready pawns from previous set, run off. Enlist a girl to help you by saying, I like this girl. Will you make her jealous for me? It's useful in field too. If you have a pivot, tell her to find you and sit on your lap in 2 minutes, or just game another set quickly. And then when you isolate the girl from that group, say, I'll have got my friend over there, let me introduce you. There are several ways to create jealousy plot in the field. Find the pivot. Enlist a girl to directly help you. Backward merge to a previously set. Introduce your girl to previous target. Forward merge by opening a new set and bringing your target with you. If you desire to game 10 specifically, know that you will need to practice advanced group theory. The art of merging group. In my set where my target was a 10 and where jealousy plotline were performed, my success simply come more often. Make your target jealous as a part of your regular C1 or C2 game, and you will have them wanting you. Demonstration are always more efficient than verbal insinuation. Nonetheless, these verbal tactics can help you install jealousy. While on phone, say, hold on, I have another call. Do this 3 or 4 times during the conversation and act annoyed. It will make you seem popular. Girls have done this to me and it works. Also mention you have a girlfriend, whether you do or not. A girlfriend of mine, or I don't think my girlfriend would like you flirting with me. Don't worry about blowing yourself out. Because when the girls say, I thought you had a girlfriend, you say, oh my god, you're attracted to me. I knew that would make you jealous. After you make her jealous, it may increase your value and attractiveness to her. But she may find her feeling and not respond immediately with visible IOIs. In fact, she may even be cold when you return to her. This is partly a congruence test, partly her pride on display. All you need to do is IOI her and she will accept it. She can't help it now. She now knows she really likes you. Grounding. I'm sure you have found yourself in a set when you reach the point where your target says, what do? You can give her your honest but lame answer like, I'm a student, I'm a system administrator, or worse, try to circumvent the question entirely with, I am an ass model. A cocky swear like that might make her laugh initially, but she will probably ask you again soon enough, do you have something to hide? The problem is that you don't have an attractive identity, or if you do, it is not a strong one. Some guy will experiment with, I am a rock star and I'm a promoter, or I'm a public speaker, but your target either will think you are lying in the same way we believe an actress is more likely a waitress, or if she does believe your evidence, become intimidated, weigh you down with her stereotype of you. For example, I'm a magician. How can she relate to that? So instead of answering her question with I am a magician, I can ground my present identity to her reality and harness the opportunity to convey a much richer personality. Here's how I do it. Well, when I was a little child, I wanted to be this, a childhood regression, tell stories about my dream and my ambition as a child. When I was a teenager, I got from childhood to what next. Now I'm a musician. Can you believe it? Talk about how I'm now, where I'm now, and what I am working next. Here is an applied format that I used to ground my identity to the recent nine's reality. It helped me attract her and build enough comfort to get her back to my place. What do I do when
Well, when I was young, I wanted to be ventriloquist, and that's a magician, and then a magician. When I got a bit older, tell story of my first birthday party, magic show, and how money was used to see Copperfield show. Tell story of how my biggest audience scared the shit out of me, and I was went how I went up and kicked ass. I really got into fear of it all. Talk about my first real TV experience. Tell her about moving to Las Vegas and why. This is a vulnerability, routine and comfort stage. Tell her what is now on my plate. What the fuck underground interest show, my impending reality show. हाँ ठीक है, बहुत बहुत हाई प्रोफाइल चीज़ बता रहा है. That was more than 23 minutes of my story. That was more than 23 minutes of my storytelling, and I was holding this beautiful girl long before I performed my magic. The reason magic works for me, of course, is that I'm actually a magician, but you don't need to use my style or perform magic yourself to use the mystery method with great success. There is no shortage of former students of mine who don't perform magic yet, but by sticking to the method and running their unique personality conveying material still consistently attract women. If I were to come in and just say I'm a magician, my target really wouldn't feel that we share commonalities or lifestyle. She would have to reply on stereotype. I would also not appear very humble. She would feel that I'm too different for her, and I would otherwise overqualify myself. Some women, it seems, would actually reject a date with George Clooney because they don't understand his lifestyle. They feel they lack the commonality, and this disparity creates discomfort. But what if he gave such woman his backstory and taught her what happened step by step as he became who he is today? This is concept of grounding. By giving my target my backstory, I ground myself to her reality when I was regular Joe, so that she can see how she too could be the type of person I am now. This is who I am today. If only she were to make similar decision along the way. You can even later use this format to encourage your target to ground her life to you during A2 by having her stick to the format. Simply ask, whoa, back up, so what happened next? Notice in my list of grounding stories earlier that the recurring theme is, this is what led me to become who I am today. You too must do this. Once you decide what your identity in fact is, does this mean you must steal my magician identity in order to do this? Do the mystery method? No. You won't be telling stories of your first birthday party magic shows unless you are in fact gave one. That would be a lie. You won't talk about how you learned the secret to a card trick by beating it out of a classmate of yours, on how years later that classmate saw you on TV and said, I can't believe your future changed that day. No, you won't use my specific material, but like me, you can use material based on your real life experience. The format or gameplay in the mystery method, the personalized material you use to fill in the format is what constitute your own personal style. Now, how does one answer the deep question, who am I? A friend of mine once told me, you are what you repeatedly do, which is about as good of an answer as I've heard. I do magic on regular basis. I perform it almost every day. Sometimes for beautiful women, sometimes for others. What do you do on regular basis? Besides being social butterfly, that is, remember the pickup artist art exists to enrich your life, not to define it. What stories do you already possess that convey that who you have become today? Grounding reality is far-reaching. It will change the way you do A2 and A3 and build comfort, but it will not alter their basic structure.
It will also change the way you choose and structure routines, sequence them. That is, which routine you will use and when, and convey to your target the way you handle life's challenges. So this is what you must do to improve your game. ओ भाइयों, पहले ये तो बता, मैंने इतना कुछ पढ़ दिया, ये आवाज गई कि नहीं गई? Shit. Realization, brothers. Is it happening? Is it happening? Can you hear me? Is it happening? Is it happening? Oh, is it happening? बच गए भाई, बच गए भाई, बच गए भाई. भाई पहले देखना होता भाई, 20 मिनट बाद देखेगा तो कैसे चलेगा रे? So this is what you must do to improve your game. Okay? Figure out who you are by looking at what you do repeatedly, something you can say in a word or two. Magician, writer, toy inventor, CEO, computer hacker, rock climber, rapper, public speaker, traveler. What would you do with your life if you have no chance of failure? Well, start doing it. Come up with several stories that convey how you went from being normal kid to doing what you repeatedly do. Practice telling these stories to others to make the stories sound enthusiastic and natural. Listening, a woman should feel as though she's been on this journey with you. While grounding, you can also ask her questions like, so what are you like as a teenager? This is a great way to open her up and get her invested in the interaction. But going for repo in this way right at the opening would seem try hard and telegraph interest. But now that she has given you IOIs and she already earned your IOIs, sparingly use question in this way can help you build strong connection with her. Here comes a review. The game is played in comfort. It's necessary to develop a wide conversational rapport, a sense of comfort and trust, a sense that the interaction is real and genuine, and feeling of connection missing element of A3 and comfort are primary reason that girl will flake out and blur when you call them the next day. Most guys get blurry numbers or numbers that aren't solid when they first start gaming. When you are real with a girl, it creates trust and allow her to feel safe. Don't front, sulk, or have a confrontational attitude. Keep it fun and remember that whatever the issue, it's not big deal. The freeze out is deliberate use of IODs to create discomfort as a way to train her out of bad behavior. The freeze out should come off sincere and inwardent. She shouldn't perceive that you are trying to push her. Rather, she should sense a slight lack of interest triggered by her behavior, resulting in temporary loss of attention or validation. A comfort-building location is usually a more quiet and secluded setting where you and your romantic interests and perhaps a new friend can share lengthier dialogue. The C1 location is quiet spot somewhere within the meeting location. The C2 location is a place to go on a bounce or a time bridge. The C3 location is within the sex location. It is important to be talkative person and to practice your conversational skill constantly. Practice moving her. Take your romantic interest from meeting location to C1 location. Be agreeable. Don't ask lot of questions, and remember, don't seek attention, approval and understanding from others. Don't get stuck on weird, creepy or stupid topic. Keep it fun, interesting and emotionally compelling. Talking is a powerful logistic tool that keeps her conscious mind occupied and out of trouble while you advance the courtship. You don't want her anti-slut defense
rearing this ugly head and screwing everything up. Sharing commonalities, building comfort and rapport, and help her to imagine spending time with you in future. Beware, coming off like you're fishing for commonalities with her is a DLV. Splendidity must be preserved. A conspiracy is shared frame between you and your romantic interest, characterized by inside jokes, nicknames, and growing connection. It is natural outgrowth of A3 process where validation was used to bait her into frame submission. Vulnerability is attractive and builds comfort. Instead of trying to protect your ego, set it free. Be willing to laugh at yourself, it shows confidence. After you punish a girl with a freeze out, give her a compliance test so that you can reward her for passing it. Jealousy is a very powerful motivator. If she feels it, that's often when she realizes that she wants you. This also gives her that much more drama when you eventually choose her. When you relate our identity, sometimes it can create distance instead of closeness. But the use of grounding routine allow her to follow your life through stories, culminating in which you are today. This helps her relate to you and emphasize as if she has been there with you. Figure out what you do repeatedly. Pursue your dreams. Do ground her reality to show your identity. Tell her stories that convey how you got to where you are today and what comes next. So, here comes the 9th chapter, Mind Game and End Game. Okay, End Game, brother, End Game. End Game is more fun. 74 pages left in this chapter, so there are 74. So if I add 74, it comes 9, 13. रुक जा 9, ठीक है. भाई कुछ तो गड़बड़ है, भाई कुछ तो गड़बड़ है इसमें. So हम पढ़ चुके हैं 8 chapters, हम पढ़ेंगे 9 chapter maybe in the next session for tomorrow. So now let's play a fucking game. हमने पिया था बहुत सारा प्रोटीन, तो हमें आ गई है सुसु. हम करके आते हैं सुसु, थोड़ी देर में मिलते हैं. Don't go anywhere, I'm just coming back from a piss.
Yo bro, who got you smiling like that? So भाई टेम्परेचर भाई मेरे कमरे का रहता है भाई 27-28, ठीक है, सच बता रहा हूँ। 26 पे करती है मेरे को ठंड लगने लगती है, तो मेरे रूम का टेम्परेचर रहता है 27 या 28। अभी तक 27 था, अब मुझे अंदर घुसा तो ठंड लगी तो मैंने 28 कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट टेम्परेचर आई लिव इन। ओके, सो डोंट कॉल मी एनीथिंग एल्स, बट दिस इज़ हाउ आई लिव। मुझे ज़्यादा ठंड नहीं पसंद, ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद, मेरे को बस इतना पसंद है कि राइट टेम्परेचर आई माई बॉडी फील्स और वर्क्स इन एन ऑप्टिमम, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिमम, यू कैन से दैट। अब फाइंड अ मैच करा था, नहीं करा था? फाइंड अ मैच नहीं आता भाई, फाइंड अ मिशन होता है, फाइंड अ फकिंग मिशन एंड सो दैट वी कैन किल समबडी ऑन दैट मिशन। हत्याएं करेंगे अपन। तो भाई हमने ये बुक पढ़ी, इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ेंगे। उस बुक का नाम है, ये तो चलो खैर वो हो गई हाउ टू गेट अ गर्ल वाली काइंड ऑफ बुक, बट जो मैं इसके बाद जो मैंने चूज़ करी, क्योंकि मैं बीच में नहीं छोड़ना चाह रहा, मैंने बहुत बुक्स बीच में छोड़ी है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं छोड़ूंगा कोई बुक बीच में। तो अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, उस जो मैं पढ़ूंगा इस बुक के बाद, उस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो भाई अपन पढ़ेंगे वो बुक, तब तक इसको छोड़ देते हैं, गेम खेल लेते हैं। टिंकू जिया, कौन सा था वो यार, वो दबंग का गाना था, टिंकू पिया टिंकू जिया, गाना ही भूल गया भाई मैं। और कोई बच्चा भी है भाई अपने साथ, बच्चा रो रहा है भैया, स्ट्रीम में बच्चा रो रहा है। Jackie. Watch the skies. भाई मुझसे पहले उतरे कैसे हुए जमीन पर, पहले ये बताओ। ओ भाई देख रहा भाई, फास्ट फॉरवर्ड। लॉन्डे की स्किल ही तगड़ी थी भाई, और पक्का माउस है इसके पास भाई, फ्लिकर ही नहीं कर रहा, गोली मार रहा है तो टारगेट हिल ही नहीं रहा है, नहीं तो हम तो मारते थे धुर्र ऐसे जाती है नौचल, धुर्र वो मार रहा था ऐसे टिकी हुई है। दैट इज वेरी गुड थिंग, और कैन यू से इट्स कैन बी अ प्रैक्टिसिंग थिंग। We will learn it too with practice. Survive and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back home. Eliminate the fucking target, brothers. Enemy soldier incoming. क्या हो गया? Located the rest. लग गई बेबी के। Shooting mags. Your squad mate is redeployed. Well done. Your squad mate's back on station. Good work. Enemy UAV overhead. भाई मैंने स्नाइपर का यूज वैसे कभी करा नहीं है ज़्यादा ना, तो आई डोंट नो। UAV in the area.
have reinforcements inbound. Enemy dropping into the AO. Incoming LBBR. Your squad made it to the safe zone. I'm hit! Gas is moving. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Target down. Marking the rest. I'm reloading! Mark remaining operators from that squad. Hunt them down. Remain. Almost done here. Loadout away. Enemy destroyed. Use your tac map to hunt down the rest of them. Enemy dropping into the AO. Taking effective fire! Got a loadout dropping down. Good kill. Marking the rest of that squad on your tac map. Get hunting. Reloading! Squad mate is redeploying. Well done. Changing max! Soldier incoming. You have reinforcements inbound. Enemy destroyed. Use your tac map to hunt down the rest of them. Enemy dropping into the AO. I'm hit! Administering stick. All squad mates are in the safe zone. Gas is closing in. Good kill. Marking the rest of that squad on your tac map. Get hunting. I'm reloading! Squad mates back on station. Good work. Enemy soldiers incoming. Located the wreck. Changing reinforcements inbound.
Target down. Marking the rest of them. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Fire sale Taking active. effective fire! Fire station prices have been reduced. Marked remaining operators from that squad. Hunt them down. Reloading! Resurgence is about to end. Make it count. Your squad mates back on station. Good work. Target down. Marking the rest of them. I'm Enemy reloading! soldier incoming. Your squad's in the safe zone. We've got 10 squads active in the field. Switching backs. Fire sales done. Prices are back to normal. I got you! Look around! Too close. Reloading! Resurgence is close. No more second chances. Your squad mate is redeploying. Well done. Your squad mate's back on station. Good work. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. I'm reloading! Be advised, you still have squad mates outside the safe zone. You've made it to the top 5. Changing mags! 5 squads still operational in the AR. You're in the top 3. Don't let up now. Supply crates have been restocked. Load up. Safe zone is a long way from your location. Move Taking like you effective mean it. fire! बढ़िया स्नाइपर था भाई रिवाइव कर लोडू शिट यार Only 2 left. 3 squads left in the war zone. Stay alert. जा सकता हूँ क्या मैं वहां तक नहीं अब तो नहीं पहुंच पाऊंगा कोई नहीं दोबारा आते हैं
भाई ये कितना रैंडम मारा, देखियो इसकी गोलियां लग रही है, मेरी नहीं लग रही। The enemy took that one. We'll get it back. डिफीट, बड़ी जल्दी डिफीट ले लिया भाई तुमने। मैं तो मेरे मत ही डिफीट ले लिया तुमने, माँ के बेटों। सही था वैसे, स्नाइपर यूज करना भी सीख रहा हूँ मैं। हमारा देखा, हमारा 14 किल भाई, अपने तो 14 किल। नहीं, प्ले अगेन करते हैं ना, प्ले अगेन, यस। एक गेम और खेलते हैं, फिर जाके मम्मी से बात करते हैं। ऐसी फैमिली ऑल्सो कम फर्स्ट, सो यू नीड टू टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल ब्रदर्स। एक गेम और फिर हम जाएंगे मम्मी के पास बैठेंगे। Samajwadi Party expelled MLA Pooja Pal after she thanked CM Yogi Adityanath for giving her justice. So मैं रील देखने लग गया क्या? Here comes the party. Enemy dropping into the AO. We're headed to the Warzone. Get geared up and stand by. क्या कर रहे हैं भाई ब्राजीलियन वाले? क्या देखियो, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। Enemy soldiers incoming. Took one out! Changing mags! Prep time's over. Now you deploy to the Warzone. भाई क्या ही कर रहा है भाई पाकिस्तान भाई, एक दो रील देखे भाई। Everything, use everything to your advantage. Resurgence. Stay alive and keep one at a time. Stay alive, right? Go get off. चलो भाई नीचू चलते हैं, नीचू। Enemy dropping into the AO. Reloading! Enemy destroyed. Use your tac map to hunt down the rest of them. Shit. कोई नहीं, दोबारा आते हैं, मौज करेंगे। इस बार दूसरी जगह उतार दिया यार, पहले वाली जगह ही ठीक थी भाई। कोई गोली मार रहा है।
ये वाली गन मुझे पसंद तो नहीं है बट उठा लेते हैं. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Taking effective fire! Red on ammo! मरा क्यों नहीं भाई ये? Enemy UAV is online. Enemy UAV overhead. Your squad mate's MIA. We're reducing redeployment time. Took a round! मार सकता था इसको भी मैं. और हिलना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हिला कर. Back in the fight! Go get your revenge. Get to the safe zone. Gas is inbound. Remaining operators from that squad. Grenade! Hunt them down. Changing mags! Good kill. Marking the rest of that squad. Get hunted. Stand to you, soldier. Stay sharp. Your squad mate is redeployed. Well done. Friendly loadout drops on the way. Target down. Marking the rest of them. Enemy dropping into the AR. Good kill. Marking the rest of that squad on your tag map. Get hunted. लैग कर रहा है ना थोड़ा थोड़ा. We've got 10 squads active in the field. हाँ वो लगा भी ऑफलाइन. Your squad is down. Stay alive to bring them back. Enemy soldier incoming. You have reinforcements inbound. Marks remaining Reloading! operators from that squad. Hunt them down. Hostile UAV in the area. Kill confirmed. We've located the rest of them. All squad mates are in the safe zone. You've got gas moving in. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. It's all on you. Stay alive so your squad can redeploy.
Enemy destroyed. Use your tac map to hunt down the rest of them. Buy sale is active. Buy station prices are adjusted. You're the last one standing, soldier. Survive until your squad can redeploy. Enemy UAV overhead. Get ready. Resurgence window is about to close. Your squad mates back on station. Good work. चलिए आगे आप Dropping चल into the AO. मुझे लगा मेरे पास स्नाइपर है दूसरी गन Some of your squad is outside the safe zone. चले चले Stand to you, soldier. Stay sharp. We've got 4 remaining. Stay sharp. Like this one is like very under the Euphrates River. That's sort of points that in. शिट 5 squads in operation in the AO. हम्म We're close. कोई बात नहीं आवाज उधर से आ रही थी तो मुझे लगा वो है कोई नहीं लेट्स सी 10 किल करे कोई बात नहीं लीव मैच करते हैं बाकी का गेम कल खेलेंगे आज 2 मैच बहुत है थोड़ी मम्मी से बातें भी कर लेंगे तो उधर चलते हैं बंदे सी बन सी यू गाइस सायोनारा टाटा बाय बाय We'll see you later again someday somehow 7:15 हुए 7:15 के बाद करा था मैंने कोई बात नहीं चलो 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी